Hello, another match in Group 1. It's Bangladesh versus Australia. Two big teams, and how do you make your Fantasy 11 team in this scenario? Be with us till the end of this video. We'll give you the perfect combination of batsmen, bowlers, and all rounders. Hello and welcome to another video by CricTips. My name is Manthan, and in this video we are going to do the complete match analysis of Australia versus Bangladesh. And before we discuss the Fantasy 11 team, let us look at some important statistics. Very interesting statistics. I mean, just look at this. Now both of these teams have faced each other 9 times, out of which Bangladesh has won 5 times and Australia has won 4 times. But interestingly, when both of these two teams have collided in the T20 World Cup, 4 times, all the 4 times it is Australia that won the match. And if you look at their performance in this T20 World Cup, Australia has played 3 matches and won 2 out of those 3 matches, looks pretty much in decent form. On the other end, Bangladesh, which qualified for the Super 12 after great difficulty, has lost all the 3 matches in this World Cup. So tremendous pressure on the Bangladesh team. On the other end, Australia looks in decent form. Let's see what comes out in this match. Now the most important part of this video, which is the pitch report. So this match is going to get played in the Dubai International Stadium. 7 T20 World Cup matches have been played on this pitch. All the 7 matches were won by the team that chose to bat second. Toss will play a very crucial role. The average score on this pitch is 150, and we will suggest you a balanced team with right set of bowlers and batsmen. चलिए डिस्कस करते हैं हमारी फैंटेसी 11 टीम और शुरू करेंगे विकेट कीपर से. विकेट कीपिंग में आपके पास 2 ऑप्शन, मैथ्यू वेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड मुशफिकुर रहीम फ्रॉम बांग्लादेश. नाउ मैथ्यू वेड को हम सजेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इन द लास्ट 10 T20 matches he has not had any big score and therefore not in good form. On the other hand, Mushfiqur Rahim looks in decent form. उन्होंने 57 runs not out score किए थे against Sri Lanka. 94 runs score किए हैं in this T20 World Cup. One of the most experienced batsmen in the Bangladesh team. Mushfiqur Rahim आप अपनी टीम में डेफिनेटली रख सकते हैं. बैट्समैन की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास है काफ़ी दिग्गज एक्सपीरियंस्ड वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, एंड देयरफॉर द नंबर 1 बैट्समैन वी सजेस्ट विल बी फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया टीम विच इज डेविड वार्नर. नाउ डेविड वार्नर ने 65 रन स्कोर किए थे अगेंस्ट श्रीलंका, वेरी फाइनली रीगेन्ड इज फॉर्म. 80 रन स्कोर कर चुके हैं इस वर्ल्ड कप में. ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपन करते हैं, कैन बी वेरी मच डेडली अगेंस्ट द इनएक्सपीरियंस्ड बैटिंग बॉलिंग लाइनअप ऑफ द बांग्लादेश टीम. दूसरे दिग्गज बल्लेबाज हम अपनी टीम में रख सकते हैं स्टीव स्मिथ. स्टीव स्मिथ ने साउथ अफ्रीका के सामने 35 रन स्कोर किए थे एंड ही हैज ऑलरेडी स्कोर्ड 64 रन्स इन दिस वर्ल्ड कप. Field against England, but always a trustable player in such ICC big events. Steve Smith आप अपनी टीम में रख सकते हैं. The third batsman will be from the Bangladesh team, which is Mohammad Naeem. Now मोहम्मद नेम की बात करें तो 62 रन स्कोर किया था अगेंस्ट श्रीलंका, हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर बांग्लादेश इन दिस T20 वर्ल्ड कप, जहाँ पे उन्होंने 82 रन किए हैं इन 3 मैचेस. बांग्लादेश के लिए ओपन करते हैं और काफ़ी अच्छे फॉर्म में मोहम्मद नेम आपकी टीम में होने चाहिए. एंड द फाइनल बैट्समैन विल बी फ्रॉम द बांग्लादेश टीम विच इज लिटन दास. नाउ लिटन दास ने 44 रन स्कोर किए वेस्ट इंडीज के सामने. वर्ल्ड कप में 69 रन स्कोर कर चुके हैं. बैट्स इन द टॉप ऑर्डर, डिसेंट फॉर्म लिटन दास होने चाहिए आपकी टीम में. चलिए शुरू करते हैं ऑलराउंडर्स, और सबसे बड़ा न्यूज़ के शाकिब अल हसन हैज़ बीन रूल्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड कप ड्यू टू इंजरी. बांग्लादेश टीम जो कि ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही थी वर्ल्ड कप में, एंड अ वेरी सीनियर एंड एन इंपॉर्टेंट प्लेयर हैज नाउ बीन रूल्ड आउट. द टीम इज क्लियरली इन शैम्बल्स नाउ, एंड देयरफॉर द 2 ऑलराउंडर्स वी सजेस्ट विल बी फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन टीम. सबसे पहले ऑलराउंडर आपकी टीम में होने चाहिए फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन टीम इज ग्लेन मैक्सवेल. नाउ ग्लेन मैक्सवेल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका उन्होंने 21 रन स्कोर किए थे और 1 विकेट भी ली थी. कम्स डाउन टू बैट एट नंबर 4. नाउ हैवंट हैड एनी गुड वर्ल्ड कप मैच, बट given the fact that the bowling lineup of Bangladesh is not very strong and experienced, Glenn Maxwell can really play an explosive innings. Important role to play as pitches are spinners friendly and will give you good fantasy points. Glenn Maxwell आपको बैटिंग और bowling दोनों के points दे सकते हैं. The other all-rounder will be Ashton Agar. Now Ashton Agar has scored 20 runs and picked 1 wicket against England. और अगर बांग्लादेश के सामने T20 सीरीज की बात करें तो 36 रन स्कोर किए और 5 विकेट्स भी ले चुके हैं.
इंग्लैंड के सामने 20 रन स्कोर किए थे विथ 2 ह्यूज सिक्सेस। दिस शोज हिज बैटिंग कैपेबिलिटीज। एस्टन अगर को आप अपनी टीम में रख सकते हैं। बात करें अगर बॉलर्स की तो नंबर 1 द वेरी बिग बॉलर फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन टीम एडम जाम्पा। नाउ एडम जाम्पा वाज अवार्डेड मैन ऑफ द मैच अगेंस्ट श्रीलंका, जहां पे 2 विकेट्स लिए थे फॉर जस्ट 12 रन्स। He picked in general 3 wickets in the World Cup, highest wicket taker in World Cup for Australia. उन्होंने 5 विकेट्स लिए हैं। Important role to play as the pitches in Dubai are spinners friendly. So Adam Zampa को आप अपनी टीम में रख सकते हैं। The other bowler will also be from the Australian team, which is Mitchell Starc, an experienced bowler from the Australian team. 2 विकेट्स अगेंस्ट श्रीलंका एंड 2 विकेट्स अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। बड़ी टीम्स के सामने विकेट्स ले सकते हैं। मिचेल स्टार्क में होने चाहिए आपकी टीम में। तीसरे बॉलर के लिए यू हैव एन ऑप्शन नाउ, ईदर यू कैन हैव पैट कमिंस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और यू कैन हैव जॉश हेजलवुड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। वी आर गिविंग यू एन ऑप्शन। अगर पैट कमिंस की बात करें तो कंसिस्टेंटली बॉल्स एट 145 किलोमीटर्स पर आवर, 2 विकेट्स लिए थे अगेंस्ट श्रीलंका, एन इकोनॉमिकल स्पेल ऑफ 1 विकेट फॉर जस्ट 17 रन्स अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन द लास्ट वर्ल्ड कप मैच। जॉश हेजलवुड की बात करें तो ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर अगेंस्ट बांग्लादेश फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन टीम। अपने करियर में 8 विकेट्स ले चुके हैं। Josh Hazelwood was also awarded man of the match against South Africa for 2 wickets for just 19 runs in 4 overs. Bowls good spell in power play and death overs, command over line and length. Josh Hazelwood, a senior player from Australian team, आपकी टीम में definitely हो सकते हैं। The fourth bowler will be from the Bangladesh team, which is Naseem Ahmed. Now Naseem Ahmed ने 3 विकेट्स लिए हैं in the 2 मैचेस ऑफ द वर्ल्ड कप। नंबर 14 आईसीसी रैंक T20 बॉलर, 21 विकेट्स लिए हैं अपने करियर में ऑफ 16 मैचेस विद एन एवरेज ऑफ 15.95। बैट से भी कंट्रीब्यूट करते हैं, ऑल्दो ही वाज ड्रॉप्ड इन द लास्ट मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। सो इन केस इफ ही इज नॉट देयर इन द टीम यू कैन गो फॉर शरीफुल इस्लाम। So that was an option with you. Now if you are someone who makes teams on fantasy platforms like Dream11 और My 11 Circle, और अगर आपको अपनी टीम के लिए चूज करना है कैप्टन और वाइस कैप्टन, we will suggest you Adam Zampa, the bowler from Australian team, and David Warner from the Australian team as a batsman. ये दोनों प्लेयर्स आपको काफ़ी valuable points देंगे given that the Bangladesh team has lost 3 matches, is underconfident, and even Shakib Al Hasan is not in team. So dono players will be from the Australian team. So that was the complete match analysis of Bangladesh versus Australia, and I hope you like this video. And if you like this video, share it with all your friends who makes teams on fantasy platforms like Dream11 or My 11 Circle. And if you do not agree to any of our players, please write it in the comments below. We'll reply you there. And never forget to subscribe to the CricTips channel, where we keep bringing you such cricketing content each and every day. See you again on this very channel in this very format. Till then, thank you and goodbye.